अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम यूर डिजिटल मेंटेनेंस हेल्पर। दोस्तों, मेरे पास ये एक लैपटॉप है डेल का लैटिट्यूड E 6400। इसको जब ऑन करते हैं तो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं आता, लेकिन इसकी कैप्स लॉक की लाइट ब्लिंक करती है जब हम कैप्स लॉक का बटन दबाते हैं। इसका मतलब है कि मदरबोर्ड बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्क्रीन पर डिस्प्ले शो नहीं हो रहा। तो लेट्स सी, हम अब देखते हैं इसकी स्क्रीन चेंज करके कि ये स्क्रीन का ही फॉल्ट है या किसी और चीज़ का। दोस्तों, हमने स्क्रीन चेंज कर ली है। अब हम ऑन करके देखते हैं डिस्प्ले आता है या नहीं। लीजिए दोस्तों, डिस्प्ले आ गया है। इसका मतलब है पहले वाली स्क्रीन ख़राब थी और हमारा मसला हल हो गया है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। थैंक्स।